ओ अच्छा, इसलिए आपको स्क्रीन में तो नहीं देख। Shanaji, so I guess we can get started. Right? Uh, we're here to talk about the complexity of research projects, and my name is Dr. Saleem Gul. I'm an associate professor here at the Institute of Management Sciences. I've been teaching here for a while, since 2005. Total teaching जो है 2002 से चल रही है, so it's coming up to 20 years in August of this year. So I'll hit a double decade figure, right? So the idea is to first talk about what complexity really is and just sort of understand this word a little bit, because it's a very familiar type of a word and you might have used that in normal conversations with people, and even people who are not very good in English, they even use the word complex or complexity and they talk about how a certain thing is quite difficult. Right? At least that's what they are thinking about. But we need to understand what this word really means. And I think every time I've talked about this idea, I've always asked this question from the audience: what do you think the word complex means for you? So if anybody would like to volunteer and give me their definition of what they perceive the word is, then we can move forward and figure out this. Something that is dependent on too many things. तो इनका ख्याल है कि डिपेंडेंसीज हैं किसी चीज के बारे में, something that is difficult to explain, hard, तो मेरा ख्याल से वो not either. आपके लिए क्या है? अच्छा, so something that requires extra effort from you. आप कहना चाहते हैं? Heterogeneity. Heterogeneous है, okay. So it's not homogeneous. Similarity नहीं है, इनको variety नजर आ रही है. कितने सही लोग हैं, आपको क्या लगता है? Budget constraints. हैं, budget कहाँ से आ गए? अच्छा, fine. Budget. About the project, what in project you have? I'm asking in general about the word complexity. Okay, you are talking about That's the question. क्या है? there are the things which are the you are not very clear about. Okay. आप सर, आपका तो तजुर्बा मेरे बराबर ही होगा या कुछ साल मुझसे ज्यादा, आपके लिए difficult. ठीक है, would you like Too many processes are involved, not easily get. In every process we have a sub process or a Sure. So she's thinking there's a lot of, sort of like a hierarchy there, something within something within something. ठीक है. अच्छा, जो तीन रह गए हैं, इनसे मैं एक और चीज कहता हूँ. कॉम्प्लेक्स का तो हमें पता लग गया. Complicated क्या चीज है? Do you know what complicated would mean for you? Things which were earlier, we can say that simple, but now they are being difficult to understand or to resolve. अच्छा. We can say that due to some circumstances, the things are going to difficult to be understanding, or we can say that they are not previously being available, those situations that are not. देखिए, आप बहनों ने झगड़ा बना दिया है क्योंकि किसी और ने भी कहा था कि difficult to understand. So suddenly now we have the sort of vague understanding of these. आपके लिए simple क्या होता है? What does the word simple mean? Simple means like any activity or anything that could be done in like very easily. Easily, okay. Easy to do. Easy to do. Easy to understand. Easy to understand, okay. Anything else? Anything that does not require a lot of कितने energy. steps? Few? के more? थोड़े ज़्यादा? Rather more, but are they are very simple. अच्छा, the steps are. Yes, less energy is required. Less For me, effort. simple is something which I can do. हाँ, okay. That can be. तो आप complicated नहीं कर सकते. Simple भी नहीं. Complex भी नहीं कर सकते आप, है? So there's things that we're doing, right? And there's many things that we do which are extremely complex, and we don't even know, like we haven't even asked ourselves a question about it, right? For example, you see something in front of you, right? कभी आपने ये अपने आप से पूछा है कि यार मुझे रीडिंग करना आती है कि नहीं आती है?
Do you ever like see some text and then you ask yourself this question? Gee, I wonder, can I read? Do you ask yourself this question? I wonder if I know how to walk. Do you just walk? It's a very complex business that you are engaging in, but you're just doing it without even asking about it. Whether you how many of you are bilingual? All of you are bilingual because I'm speaking English and you're not Angrezi, right? Some of you might be more than bilingual because English Urdu वाले bilingual हो गए, वो पठान जो बीच में हो गए वो am bilingual हो गए या multilingual हो गए. So you can switch between one language and another language very rapidly, right? So complexity is something that we have been grappling with since childbirth, or हम इसके साथ चलते जा रहे हैं. I think you would all agree. Right? Complicated is something that we have also been seeing since childbirth, and we are experiencing it, but the way that we deal with it is slightly different than how we deal with things that we classify as complex. And again, simple things are also things that we are always dealing with, right? Do you think this is a simple activity? Is this a complicated activity or is this a complex activity? I think it depends. For us, it's very easy and simple to open a bottle of water and drink water. But then again, if you go, if a disabled person is doing it, if someone has hand motor function, is not as developed as us, it would be a very difficult or complicated task for them to open this bottle of water. मेरा छोटा है स्माइली उसका निकनेम है ना स्माइली की ट्रेनिंग कर रहा हो ना वो क्या करते हैं पूरी बोतल का मुंह अपने मुंह में लेता है and then he tries to drink it तो उसके साथ जब भी पानी शेयर करो तो आपको डबल रोटी फ्लेवर पानी मिलेगा आपको whatever he is eating आपको वो पानी रिटर्न में मिलेगा. एक दिन मैंने गलती से उसकी स्कूल की बोतल से पानी पी लिया. मैंने कहा स्माइली ये क्या ये तो चिकन नगेट वाला पानी था. कहते हाँ ना बाबा मैंने चिकन नगेट खाए थे ना. तो देखिए it's such a simple thing but somebody small is learning how to sort of deal with it, right? So subjectivity is an element of it. Something might seem simple for you, something might seem extremely complex for somebody else. So while you were not here, I was just looking around, जितनी मेरी नजर जाती है उतना तो मैं पढ़ रहा था. So Dr. Falana, the Dr. Dingana and Dr. Falana, right? So many PhDs are there. Hopefully you are PhD doctors and not MBBS doctors. So you have written a significant piece of research. You have defended it, and now you have earned this title to be called a doctor. So you have been through. अब ये बेचारे मिस्टर और मिस जो बैठे हैं मिस जो बैठे हैं they haven't been. So something for you might seem a little bit now easier because you have been through. For somebody else that would definitely look slightly challenging because they haven't been through. Right? So that's the complexity of a research project to a certain extent as to who is the one perceiving it, who is the observer, whose point of view are we taking? Are you taking my perspective on a research thesis and you want to ask me, is it a difficult thing or is it an easy thing? So I'll tell you it's quite easy. It's quite easy because I wrote one thesis. In my PhD, I wrote one thesis in my master's. But it's quite easy now because I've supervised a few PhD students. So vicariously, I've written a few other PhDs because I kept reading their things and I was always thinking a couple of months ahead of them and saying, I would like this thesis to go in this direction, then I would like it to go in that direction. But at the same time, I don't want to hold the student's hand and say, chalo, ab aise or ab aise. Because that diminishes this ability to discover and this ability to make mistakes and this ability to fall flat on your face and learn and say that didn't work for me. Now I'm going to come up with my own way of it, right?
So we want to instill in a student like this confidence that they are improving and they are becoming confident at doing it. So eventually then he is going to or she is going to go ahead and guide somebody else. So the complexity gets removed out of it. Right? तो मेरे ख्याल से एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए हमेशा के लिए वो ये है कि आपके पास स्टूडेंट आते रहेंगे आप बूढ़े होते जाएंगे फिर आपकी एज इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी आप होपफुली 40 की दिहाई में या 50 की दिहाई में ऊपर नहीं जाएंगे इधर ही रहेंगे तो you never know it's a lottery right जिसका probably not उसकी probability कम है आपको कोई नहीं लेके जाने वाला अच्छे लोगों को आपके कोई स्किल्स होंगे तो मार्स में काम आएंगे फाइनेंस और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है साइंटिस्ट मुझे भी नहीं लेके जाना so anyway we'll probably hopefully stay alive long enough but हम बूढ़े होते जाएंगे ना लेकिन people will be coming and joining us and learning from us for them it would still be a complex thing right so थोड़ा सा क्या कहेंगे empathy would go a long way and we should sort of keep that in our mind और ये देखिए मुझे इतनी complex चीज पकड़ा नहीं है क्या here's my little agenda is to understand what makes these research projects complex पहली बार जब ये मुझे शायद ने दिया था कुछ महीने पहले की बात है ये कोविड में हमने ऑनलाइन ये किया था मैं घर पे परेशान बैठा हुआ था कि ये मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स लाइक कौन है तो इतना अजीब सा ये किसने दरियाफ्त किया है ये टॉपिक ना देन आई सैट डाउन एंड यू नो थॉट अबाउट इट एंड diminished the complexity of it and came up with some sense of it. This is my sense of this. Number two, explore ways that can help us to overcome the complexity. So what can we do? हम क्या लाया मदद इख्तियार करें क्या steps करें तो मेरा experience आपके तजुर्बे और आप उसमें भी बात करते हैं interconnections को देखते हैं कि वो क्या चीज़ है research के अंदर ये झकड़ के रहता है where is that notch it up together. Too much to look at that. And also understand this idea of networks in the research. So milieu is a fancy way to say an environment, I guess. Right? Environment to God given होता है milieu आप create. हमारा आपस में जो माहौल बना हुआ है ना that's the milieu. जो बाहर कायनात में हो रहा है बस वो environment. So ये देखिए complexity. I heard some definitions and things that I call there. So the state or quality of being intricate or complicated. अभी क्या है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस आई डोंट नो लेकिन गूगल में आप सर्च करें तो ये चीज निकल आई और उसके साथ लिखा हुआ है कि ये ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी होती तो मैं मान लेता लेकिन they're using the word complicated to explain the word complex. हाँ और मेरा एक दोस्त था ना बहुत पुरानी बात है रात के कोई सुबह के 4 बज गए थे और जवानी की नशे वशे करके जो भी हमने किया हुआ था हम बैठे थे सीढ़ियों के ऊपर और सनराइज देख रहे थे तो वो मुझे कहते हैं कि if the human mind was complex enough to understand the human mind, it would be too complex to understand itself. तो मैंने कहा मैं पेन निकालता हूँ तो हमने वो कागज पे लिखा मैं कहा चलो सुपर सन उसने साइन भी किया उस पर डेट भी लिखी तो अभी तक मेरे पास एक कागज पड़ा हुआ है Yes, the human mind was complex enough to understand the human mind. It would be too complex to understand itself. देखेंगे नशे अच्छी चीजें नहीं है करे तो कीमती वाले करे So complex is something. Second, the behavior of a system or model whose components interact in multiple ways
and follow local rules, meaning there is no reasonable higher instruction to define the variations possible. What do I mean by this? Can I use this? मास्टर के साथ 2 मिनट के लिए वादा। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि what does it mean? No reasonable higher instruction. And what is the concept behind it? ठीक है, तो आप कोई हायर लेवल इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम दोबारा अप्लाई करेंगे और फिर आप देखते हैं इसका करिश्मा। We've got a simple straight line, ठीक है। रूल ये है कि इसको हमने 3 पीसेस में डिवाइड, 3 इक्वल सेकेंड रूल ये है कि इसका जो मिडल पार्ट है ना उसको हमने इरेज। So anytime you encounter a straight line, you will split it into 3 equal pieces, erase the middle, and form a 60-degree triangle. So a 60-degree angle with the right line. Simple? Yes, okay. How many lines do I have now? 4. Take 1 each. We are way one. Okay, so we reapply it. I've got many more lines, so let's reapply it again. And I can go until Qiyamah, right? And it would look the same no matter how many times I do it. It actually is not done very nicely, but if you do it very well, it looks like a snowflake. And if you do it as a triangle and you start it up, it actually starts looking like. Do you anticipate that this would come out from my simulated rule? So here's the thing. Localized rules being applied, and there's no master control, right? So what's going on? Something came out, right? Something of an epiphany, something unexpected, something that we were not ready for. We weren't ready for it. This is what happens in your research as well. आपके क्या rules? आपके क्या localized? क्या आप गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करते रहते हो हर बार और छोटे छोटे से कोई सर्चेस मारते हैं तो बस आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या इमर्ज होगा? आप कॉम्प्लेक्स सर्चिंग शुरू कर लेते हैं, यू स्टार्ट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा एंड और एंड फ्रेजेस, तो फिर क्या होगा? आप दिन के टाइम बैठ के रिसर्च करते हैं तो फिर क्या होगा? उसके बरक्स अगर आप दोपहर को करें या रात की तारीकी में और खामोशी में बैठ के करें तो फिर क्या होगा? राइट, खाना खाने के बाद रिसर्च करें, खाना खाने से घंटे के बाद करें, खाना खाने के इमीडिएटली बाद करें, खाना ना खाएं और फिर करें। सो कोई डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या होगा और क्या निकलेगा और कैसे इमर्ज होगा? और जितना आप अपने रूल्स के साथ खेलते रहोगे उतना डिफरेंट निकलेगा, राइट? सो हियर्स माय टेक ऑन दिस। लेट्स सपोज Madam Mariam is doing a research on a particular topic, and Dr. Asad Javed is doing research on the same topic. And then we get students like this, and they are, when they find out कि ये वो एक ही काम कर रहे हैं, परेशान, उसने तो मेरे टॉपिक उठाया, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरी पीएचडी अब पीएचडीएबल रही कि नहीं रही, मेरा एमएस जो है अब वो एमएसएबल रहा कि नहीं रहा, मेरी यूनिकनेस किधर? क्या कहोगे आप उसको? क्या दर्ज देंगे? क्या बस
सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया तुम्हारा भाई, अब तुम्हारा क्या बनेगा? That's what you say to such. Do you give them the bad news कि भाई जिसने पहले जमा कर दिया था फिर उसका जिसने लेट जमा किया हो बेड़ा गर्क? कि नहीं, do you say to him कि नहीं, it can never be the same. Right? It can never be the same because the way that you are doing it, the way that you are searching, हम कहते हैं ना कि there is no article on it. Is there no article or did you find no article? आपकी टर्म्स क्या थी, आप क्या सर्च कर रहे थे, किस डेटाबेस में घुसे हुए थे, किस इंडेक्सिंग सर्वर के ऊपर आप चिपके हुए थे? तो मे बी यू फाइंड समथिंग एंड दे फाइंड समथिंग डिफरेंट देन यू, कुछ चीजें सिमिलर कुछ हटके। फिर रिसर्च क्वेश्चन, इनका रिसर्च क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट, आपका रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द थिंग दैट गिव बर्थ टू दिस होल डैम थिंग, उनका डिफरेंट आपका डिफरेंट, राइट? सो शी सॉ समथिंग, यू सॉ समथिंग, there's always going to be this little bit of so things emerge, unexpected things. It's also complexity has been defined as the quality or state of being complex. Merriam-Webster वाले ने भी सस्ते नशे किए, and it expresses the degree to which components engage in organized and structured interactions. इस तरह से किसी ने कुछ हल्की फुल्की इसी तरह की बात की, so you see there is a lot of but here's my take on it. मेरी PhD complex projects के ऊपर है, तो इतना बड़ा section complexity पे लिखा था, कहीं तो काम आया. So we will take complexity at least. We'll talk about things having components, we'll talk about things that interact with each other, and we'll talk about this idea of components, right? So components क्या हैं आपके research के? ढेर सारे components हैं ना, अब डिपेंड करते हैं किस टाइप की रिसर्च का आप सोच, आर्टिकल लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, डिसर्टेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस टाइप का स्टडी है, सेकेंडरी डेटा के ऊपर बेस्ड है, फील्ड वर्क के ऊपर बेस्ड, मेथोडोलॉजी कौन सी आपने यूज की? आपने अगर ग्राउंडेड थ्योरी किया तो मे बी देन इट विल लुक एंटायरली डिफरेंट, बट अगर आपने ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज फॉलो किया तो थीसिस के कंपोनेंट्स तो हैं, चैप्टर 1 भी है और 2 भी है और 3 भी है और 4 भी है. 1 का 2 के साथ क्या रिलेशनशिप, का 3 के साथ क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड सच इंटरैक्शंस हो रही है, हमारे आइडियाज इंटरैक्ट किसके साथ, और लोगों के आइडियाज के साथ, थिंग्स दैट पीपल हैव सेड already, things people said thousands of years ago, we're still talking about things that people are saying now, we're still grappling with those. Our mind is coming up with khayalat and we are interacting with this, right? वो Bertrand Russell की एक famous सी वो है, एक नीचे citation उसने दी हुई है अपनी writing में, पता नहीं ऊपर क्या बोला था लेकिन वो citation मुझे याद है. Citation ये है कि this was revealed to me in a dream. करे ना, पब्लिश करे कुछ अभी, this was revealed, मुझे अल्हाम हुआ ना, तो ये तो आपको कहेंगे निकल यार इस पतली गली से. Does that still work, and why did it work for Russell? So we need to understand कि हमारे thoughts की क्या interaction रहती है औरों के thoughts के साथ, literature के साथ, material के साथ, और emergence का आपने देखिए ऐसे ये इसके कंपोनेंट्स हैं पूरा का पूरा, छोटे चैप्टर्स, सेक्शंस, और फिर उनके छोटे छोटे सब सेक्शंस, और फिर उनके भी शायद सब सेक्शंस, उनके अंदर फैंसी से टेबल्स और प्यारे प्यारे से फिगर्स और ग्राफ्स और पेज नंबर्स एंड फॉर्मेटिंग और नंबरिंग सीक्वेंस, citation styles and so forth. Arguments, there are arguments, so that's good.
क्रिटिक्स हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कि नहीं? आपने कोई क्रिटिक की जहमत ही दी कि नाम तो दे देते ना हम उसको क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लेकिन वो क्रिटिक किधर है और किस चीज के ऊपर क्रिटिक करते हैं आप? कभी आपने ये सोचा? When does your literature just changes from being just a literature into a critical review? हम तो चाहते हैं ना इमरान कि क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो ना, तो ये क्या क्रिटिक ऑफ कि ये क्रिटिक इनफ है कि ये जो है ना इन्होंने अंग्रेजों से डेटा लिया था तो मैं आपकी मुसलमानों से ये जी इस्लामिक बैंकिंग इन्होंने ये पर्सपेक्टिव कभी नहीं लिया, एटीएम मशीन्स को इन्होंने कभी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, तो इसलिए जी मैं एटीएम मशीन्स के ऊपर सलाम उसको देख रहे हैं क्या? आप कौन से नशे कर रहे हैं? लेकिन वेरी नाइस एंड he is convinced that that is the right way of doing it. So is that good? Is that bad? Is that even right? Is that even well? Is that something? So we should be critiquing things and we need to learn कि critique कैसे होती है और ये literature review critical बनता कैसे? How do we learn that? Reasons और conclusions जो आप उससे draw कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त भी हैं कि नहीं? जो आपने समझा और उससे जो आप कंक्लूड कर रहे हैं, क्या आपने ठीक समझा था? तो फिर भी हम कहीं कहेंगे कि आपकी जो कंक्लूजन थी वो ठीक थी। इसमें भी वो स्ट्रेट सी चीजें हो जाती हैं। Men have 2 feet. Chickens have 2 feet. Therefore, chicken are men. It's absolutely correct by the terms of logic. Yes. इसका आप टेबल भी निकाल लें तो ये बिल्कुल टोटोलॉजी में करेक्ट निकलता है, ऐसे कोई लॉजिकली करेक्ट, लेकिन अब आप क्या कहोगे? In terms of field there, equal. नहीं, आपको कहना चाहिए कि यार निकल यहाँ से, ठीक है? Because this doesn't, the conclusion is not correct. Yes. You know it and I know it. वो फाउल की कैटेगरी में आते हैं, मैं और आप तो होमो सेपियन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इसके साथ एग्री कर रहे हैं तो मे बी निएंडरथॉल एलिमेंट आपके अंदर ज्यादा है, लेकिन हम तो होमो सेपियन है तो हम इसको वेहेमेंटली डिनाई करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस और फॉर्मेटिंग वगैरह, तो ये आपके थीसिस के कंपोनेंट्स। आप इसमें किधर है कॉम्प्लेक्सिटी, कहाँ है? Where do you see the complexity? Not a single instance of the word complexity exists on this page, but there's a lot of complexity. It becomes complex when they are put together. Or Arguments can be complex. Conclusions could be complex. Catch is complex. Conclusions Can, yeah, sure. Arguments. Critique can be complex. Synthesize literature language. Okay. Quantitative Quite complex. Sure. quantitative techniques become complex. Okay, आपको उसमें नजर आ रही है So every step has its own एनालिसिस और उसके Right. sure. जी आप लोग Linking them together because you will have to make a comprehensive conclusion. You have to go to the conclusion of linking them. आप दोनों के लिए कम्प्लेक्सिटी आपको कहीं नजर आती है? Sir, connection with one another, one chapter with another, yeah, ideas are not connected. आप क्यों छुप गए? आप भी तो सामने है ना, आप भी तो Yeah, the ideas, they don't have strong interlink. sure, very well. There's no clarity. So the reader can Okay. grasp the. Okay. Difficult ideas and difficult to comprehend, difficult to pick up. Agree? Okay. The things like, for example, we are finding a particular element and we are explaining it at a multiple level, Sure. improving it at a multiple level. That is Sure. Okay. Now, the thesis and the whole, when we don't have the skills to do the work. Sure.
एग्जैक्टली पूरा का पूरा ही कॉम्प्लेक्स है Sir, we don't ask it. नहीं, लेकिन आपको तो डॉक्टर राबिया, आपको तो अभी ये थोड़ा इजी लगना चाहिए ना आपके लिए। Sir, भूले नहीं अभी. नहीं नहीं, भूलना नहीं, तो याद आ जाता है वो आपके साथ है। Right, so there's complexity in this, and कोई एक तरफ से देख रहा है, कोई दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है, और आप सारे ठीक कह रहे हैं, आप में से गलत किसी ने भी नहीं कहा, किसी को पूरा का पूरा कहो, that's perfectly fine, ठीक है। किसी को पीसेस उसके कॉम्प्लेक्स लगा, that's perfectly fine as well। किसी को आर्ग्यूमेंट्स के लेवल पे और किसी को के लेवल पे, all brilliant and all of you are। लेकिन here's the thing, should I decompose it? जो कि हम हमेशा से करते हैं। हमने जब भी कोई मुश्किल चीज देखी है ना, उसको हमने पीसेस में तोड़ने की कोशिश की। हमने तालीम को छोटे पीसेस में तोड़ा, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल एंड सो ऑन, और फिर एसोसिएट डिग्री भी आ गई, और बैचलर्स डिग्री, और फिर मास्टर्स डिग्री, और फिर पता नहीं इसके बाद क्या अज़ाब इलाही आने वाला है। लेकिन हमने तो इसको भी, और इसको भी फिर फर्दर तोड़ दिया है, असेंबली लाइन बना, ठीक है। अब आप भी एक असेंबली लाइन में से गुजर रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले अली आए हुए थे, अभी मैं आ गया हूँ, फिर अली आएगा, फिर मैं आ जाऊंगा, कल कोई और आ जाएगा, सुबह जोहरा आई हुई थी, कल को जुलेखा आ जाएगी, राइट। थिंग्स विल गिव, आई होप यू डोंट हैव अ जुलेखा, बट पीपल विल कम एंड गो, राइट। लेकिन एंड ऑफ द डे कौन कहेगा ये स्टेटमेंट किसकी होगी? ये जो बैठे हुए हैं ना, इन्होंने जो कुछ सीखा है, शायद कहेगा, जोरा कहेंगी, रोमाना कहेंगी, कौन कहेगा? कोई कह सकता है? कोई गट्स रखता है कि वो कहेगा क्या? बल्कि हर एक यही कहेगा कि मैं आया था, मैंने 2 सेशन दिए, तो कुछ शायद इन्होंने मुझसे उठा लिया, कुछ शायद किसी और से, कुछ शायद किसी और से। एंड द फनी थिंग इज दैट यू ऑल सैट for the most part through the same things, but your level of understanding and what you take away would be remarkably different. So like that, a lot going on, but there must be something that is the Gordian knot, the most difficult of things in here. कोई इस तरह की चीज है इस पूरी कहानी में जो कि इस बिल्डिंग को सो टू स्पीक खड़े रखे हुए हैं। अगर वो खराब हो जाती है तो ये पूरी की पूरी इमारत ही है। इस कहानी में क्या है जो कि पूरी स्टोरी को खड़ा, एक रिसर्च में क्या है जो कि पूरी कहानी के ऊपर उसके ऊपर खड़ी, अगर वो लरस जाए तो बस वो बिल्डिंग। एक ये कह रही है लिटरेचर, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं, गलत एनालिसिस हो गई ना, दोबारा कर ले, थीसिस तो नहीं जाया हुआ ना, लिटरेचर में कुछ कमी पेशी हो गई, थोड़ा ऐड कर ले, टाइटल तो आखिरी दिन तक हमने खुला छोड़ा होता है, इसमें ये डाल देते हैं, इसमें ये निकाल देते हैं, फिक्र नहीं, इसको आगे कर ले, एक और कोलन लगा ले, और फिर गलती से वो जिसने बीच में ना एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया होता ना, उसको पे पकड़ लेता ता चिकला कड़ो करना प्रपोजल डिफेंस करना। तो एएसआरबी ने आपका प्रूव किया था, उसमें एपोस्ट्रोफी एस था, इधर आपने नहीं लगाया, तो अब जी आपको एएसआरबी वापस जाना होगा, ये एपोस्ट्रोफी एस तुमने क्या कर दिया है मेरे साथ? हमने एक बंदे को पकड़ा हुआ है, साल हो गया है, इसी बात पे पकड़ा था, आज तक क्या हुक्म हुआ, फिर तो हुक्म। तो अब तुम सोच लो, एक कॉमा लगाना चाहोगे तो फिर ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो फिर इंतजार करो, हम तुम्हें उधर लेके जाएंगे, वहां पे अप्रूव करा। मेरा एक बहुत जिगरी यार है, वो फिलोसफी डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी होता है, उसके टाइटल के थीसिस में स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, थीसिस के टाइटल मैंने, सॉरी मैं कैसा डिस्लेक्सिक हूँ, नहीं आई एम स्लाइटली डिस्लेक्सिक, सो समटाइम्स आई गो रॉन्ग। तो उसके थीसिस का जो टाइटल है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसने ये सोचा कि अब इसको ठीक करने के लिए मुझे एसआरबी करना होगा।
और डिग्री लेने के लिए है कि बस छपते हैं लोग। सो ही पब्लिश्ड इट विद दिस स्पेलिंग मिस्टेक। तो मैंने उसको कहा है, इसको कहते हैं पर्शियन फ्लॉ या पर्शियन फॉल्ट। ये जो पर्शियंस है ना, ये बड़े वेल रिनाउंड है कारपेट्स वगैरह कालीन बनाने में। तो इनका ये ख्याल था ना कि परफेक्शन तो सिर्फ अल्लाह की जात में होती है। तो शुरू के जो ये घंटे बांधते हैं ना, उसमें ये कस्तन एक गलत जस्ट टू सॉर्ट ऑफ डिक्लेयर के परफेक्शन ऊपर है, इसमें गलती है। दैट्स कॉल्ड अ पर्शियन फ्लॉ। तो मैंने उसको कहा है को तो शुरू में ये गलती बात है। तो किधर है टाइटल से लेकर नीचे तक आपको जगह जगह पे कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी। लेकिन फिर मेरा वही सवाल कि वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है जिसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी? मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी रिसर्च गैप, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, वो पहले से सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। वो आपका, मेरे ख्याल से अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या खुद अगर कोई एक टेक अवे रखना चाहेंगे, तो आप हमेशा ये रखें कि पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि डेटा मिलेगा क्या। फॉर एग्जाम्पल ना, नामालूम अफराद वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू वर्क ऑन। और फिर आप नामालूम अफराद से जाके बात करना चाहेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं, फैमिली को कैसे आप वो कर रहे हैं, और ये है वो है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, आप लिटरेचर भी कर लें, सब कुछ कर लें। अब जाएं जी फील्ड वर्क करें। So the first thing that you should think about is whether data is going to be available or not. So it might seem like a very sexy topic, but because the data is not available, therefore you shall abandon it as quickly as possible. Right? Rather, you should choose topics on which you can actually find data, because अपने लिए काम देगा, ठीक है। दूसरा अगर कुछ टेक अवे है वो ये कि अपने या किसी और को गाइड करते हुए ये ध्यान दीजिए कि टाइटल में जितने वो ज्यादा अल्फाज डालेगा ना, उतना उसका लिटरल भी ऐसा होगा कि उसको हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे थीसिस का टाइटल था द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये बड़ा सेक्सी सा टाइटल था, मैं बड़ा खुश था जब मैंने ये बनाया। फिर जब मैं लिखने के लिए बैठा तो फिर मुझे पता लगा कि अब मुझे कॉन्फ्लिक्ट का भी लेट रिव्यू प्रोवाइड करना, नेगोशिएशन का भी लेट रिव्यू प्रोवाइड करना है, कॉम्प्लेक्सिटी का भी प्रोवाइड करना है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जब मुझे रियलाइज हुआ तब तक 8-9 महीने गुजर गए थे। तो मैंने कहा बस अब तो गधे की गैरत है, अब तो ट्रक के साथ टक्कर खानी ही होगी। सो आई एंडेड अप डूइंग अ लॉट। फिर उसके बाद जब मैं किसी को सुपरवाइज करता हूँ, वो जब इस तरह के टाइटल्स लाता है तो उसको मैं कहता हूँ भाई पता नहीं अपने साथ तुम्हें नफरत है या क्या चक्कर है, तो प्लीज रिड्यूस है, बिकॉज इट्स अ बिग monster that you're trying to deal with. There's complexity there from the get-go. You can actually end up hitting yourself on the leg at the very start, and which is what you don't want. Right? But what really is keeping this entire building afloat is what somebody rightly said, is the methodology. Okay. Now, what leads you to the methodology? You should always think this. Is the literature leading you to the methodology, or is something else going to lead you? लेकिन डायरेक्टली किस चीज के थ्रू? ये तो इनडायरेक्टली लिटरेचर हमें लीड करता है ना। What does directly lead me into the methodology? Objective of the study. ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये वैसे पता है, मैं उस दिन एक बुक पढ़ रहा था और उसने तो मेरी वो दुनिया को उठा के ऐसे कर दिया ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मेरा और आपका आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एक ही है। और वो बड़ी कोई नामी करामी राइटर की बुक थी, और उन्होंने जो टर्म ऑब्जेक्टिव यूज किया है और उससे जो सेंस लिया है, इट इज एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट यू एंड आई हैव बीन टॉट एंड व्हाट यू एंड आई आर टेलिंग पीपल व्हाट इट इज। तो मैं खैर बताना भी नहीं चाहता, बट आई एम स्टिल अपने दिमाग में उसके साथ खेल रहा हूँ कि ये इससे क्या किया हुआ है ऐसा टोटली। पर श्योर ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नीचे उससे so your research questions then leading up to your
methodology. That's where the entire foundation is. ये हिल गई तो the whole thing collapses, right? So अब intricateness है ना, complexity क्या है, braided है, interconnected है, इस तरह है, ऐसा है। तो वो आपको किधर मिल रहा है, वो सारा का सारा कहाँ से जा रहा है, research। क्योंकि अगर आप कहें ना कि literature, तो फिर ये defendable है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी लिटरेचर से और इनकी अंडरस्टैंडिंग उसी लिटरेचर से सेम नहीं निकलती। लेकिन जब रिसर्च क्वेश्चन लिख लिया गया ना, और हम कह के मेथडोलॉजी इसलिए ली गई है क्योंकि इस रिसर्च क्वेश्चन में ये कहा गया है एंड सो फोर्थ, सो दिस इज द राइट वन, तो देन द अदर पर्सन हैज नो चॉइस बट टू सॉर्ट ऑफ अग्री विद यू एंड सो दैट इज द मेन थिंग इज द मेथडोलॉजी। So complexity is there in the topic selection. Many people are परेशान के topic कहाँ से आता है? कुछ लोग coffee shop से उठा के ले। शावर में तो ये बहुत होता है। That's what the news है, coffee shop में। आप कहाँ से लाएंगे topic? Where does the topic come from? सिचुएशन कैसी है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, रीडिंग तुम्हारी कैसी है, मायोपिक सी रीडिंग है कि ब्रॉड रीडिंग्स करते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स, मेनी पीपल कम अप विद। आर्गुमेंट्स के बारे में हमने बात की। आर्गुमेंट्स कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स भी हैं, सिंपल आर्गुमेंट्स भी हैं, और कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हैं कि उसके अंदर फिर प्रेमिसेस को छुपा दिया जाता है। कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसमें एक प्रेमिस दिखाते हैं, दूसरा हाइड करते हैं, कंक्लूजन दिखा देते हैं। आर्गुमेंट को भी समझना है कि आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट के लिए दो ट्रूथ्स होने चाहिए और एक रीजनेबल कंक्लूजन, टू थिंग्स एज ट्रूथ्स एंड वन थिंग एज ए कंक्लूजन। So if the two truths are hidden and just the conclusion is shown, so now you have to assume the two truths. तो difficult हो गया। एक truth दिखा दिया, एक truth hide कर दिया, conclusion दिखा दी, तो it's relatively easy to come up with the second truth के वो था। दोनों truths दिखा दिए, conclusion hide कर दी, तो अब आपको निकालना है कि conclusion उसकी क्या है। और बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि वो truths जो हैं वो नहीं, वो उनके ख्यालात होते हैं, लेकिन वो आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं बिकॉज दे आर अथॉरिटी फिगर्स दैट यू परसीव कि उन्होंने आपके सामने ट्रूथ्स फेंक दिए, और फिर आप फिसल जाते हैं और वो वहां से कुछ कंक्लूड कर देते हैं और आप कहते हैं वो ठीक ही कह रहा हूँ, बाबा है ना, बाबा तो हमेशा ही ठीक कंक्लूड करते हैं, एंड देन यू रेंडर योरसेल्फ इनटू ए प्रॉब्लम, राइट? सो यू शुड लर्न a little bit about critical argument analysis, right? And if you understand this concept well, then you would be able to critique things and it. और ये बाबों में ये कमाल है कि इन ट्रूथ्स और इन कंक्लूजन में स्पेस बनाते हैं, उनको दूर लेके जाते हैं, तो जितना बीच में फिलर्स और मुश्किल अल्फाज है ऐसे, एंड दिस आल्सो वाज द थॉट ऑफ एरिस्टोटल एज वेल। बीच में तो आप कितने अच्छा, तो बाय द टाइम यू गेट टू द कंक्लूजन वो आपको इधर-उधर करके और से बात So that's called a complex argument, and you need to take up some reading and argument analysis. Right, so there's a lot of complexity there. अब इसमें बस ये है कि arguments की जो analysis आप सीख जाए तो फिर आप भी इस तरह के बकवास से तरीके कर सकते हैं कि उसको मुश्किल बनाए, ताकि अपने एग्जामिनर्स को या जो भी आपका रिव्यूअर है उसको फिर आप फूल करने की कोशिश करें। बट आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट रिसर्च शुड बी अबाउट। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी meticulous, it should be understandable, उस तरीके से जाना चाहिए। स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी भी है, स्पेसिफिकली द थीसिस स्ट्रक्चर। मेरा जो अपना थीसिस का सुपरवाइजर था ना, वो बहुत ही ट्रेडिशनल, तो उसको मैंने कहा वो नहीं होता, वो बिल्कुल बस ब्रिटिश सोचें तो आपको बस टेरी विलियम्स नजर आना चाहिए ना, वो इस तरह का ब्रिटिश टाइप की चीज था ना। उसको मैंने एक दिन कहा कि यार हमारे तो यहाँ पे वो 3 पेपर अप्रोच भी है, तो मैं वो 3 पेपर अप्रोच पे पीएचडी कर लेता हूँ ना, 3 पर्चे लिख लूंगा। कहते यार जिंदगी में कितने थीसिस लिखोगे पीएचडी के? मैंने कहा इंशाल्लाह एक।
हाँ इंशाल्लाह काम। तो उसने कहा तो यार तो एक ही लिखना है तो ढंग से काम करो, अ प्रॉपर फुल कंप्लीट थीसिस। बाद में पर्चों वाले गेमें करना था, राइट अ प्रॉपर लॉन्ग ब्रिटिश थीसिस। So I wrote a proper long British. What do I mean by that? A long thesis? आपकी थीसिस पे आप क्या लिखते थे डॉक्टर साहब? This thesis is submitted in partial fulfillment. मेरे thesis पे था, this thesis is submitted in fulfillment. It wasn't a partial fulfillment, it was the fulfillment, right? So, वहाँ पे उसने कहा कि भाई traditional speech, ठीक है? साथ में हमारा कुलीग था, वो बैठ के नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में करके आ गया, डॉक्टर नौमान उसका नाम है। इधर हल्की सी लिटरेचर है, फिर भयानक सी तस्वीरें हैं, फिर कोई रिसर्च क्वेश्चन है, फिर कुछ मेथोडोलॉजी आ गई है, फिर कोई रिसर्च क्वेश्चन आ गया, फिर कोई, और इस तरह करके हर जगह पे आपको लिटरेचर नजर आ रहा है, हर जगह पे आपको ये चीजें, मैं उसको भाई non-traditional. So, which one is simple, which one is complex, which one is complicated, right? So it depends. Uske liye that made sense, but also the person guiding him, for them, it was something that really. Language. मैंने किस कलर की पैंट्स पहनी हुई हैं? It's complex. नहीं नहीं Stage, army stage. ठीक है, whatever, army green, not sorry, क्या कहा है? We said pants, he said. इसी तरह मैंने भी अपने सुपरवाइजर के साथ बैठा हुआ था, टॉकिंग टू मैंने, उसने कहा शुरू शुरू के दिन थे कि यार उसके ऊपर story telling in the organization could be a nice methodology that you can use in your thesis. So मैंने कहा हाँ मुझे पता है स्टोरी टेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कहते यूज करनी है, इतना मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन कहते अगर बात करनी है तो हमारे पास एक टीचर है जॉनथन क्लाइन, ही इज अ वर्ल्ड रेनाउंड अथॉरिटी, तो उससे मैं तुम्हें मिला दूं। तो मैं कहो मुझे जॉनथन को जानता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। हैं हाउ डू यू नो जॉनथन? मैं कि यार ही इज द वन हु वेयर्स द पिंक कलर पैंट्स ना, वो पिंक कलर की ट्राउजर्स में, गिटारिस्ट भी था, पिंक ट्राउजर्स पहनता था, टी शर्टों में आता था, पागल से बाल थे ना, ही इज द वन हु वेयर्स पिंक कलर पैंट्स ना। ओ हंसी, ही इज लाफिंग और ब्लशिंग। अब दरवाजा खुला था, अपनी सेक्रेटरी को कहता है सू गेट इन हियर ना। अब सू आ गई, हाय टेरी व्हाट्स गोइंग ऑन, कहती है डू यू नो व्हाट कलर पैंट्स जॉनथन क्लाइन वेयर्स? और उसके मुंह पे वो रोज़े कलर आ गया ना उधर ना। Excuse me. Saleem knows what color pants he wears. And she says, do you really? I'll leave you boys. Chali go, bye. So funny. Yeah, do you know what pants are? I said, oh, pantaloons. In Britain, these are trousers. Like in the US, these are pantaloons. Yet in Britain, pants are what goes inside. Like, I have no idea what color pants Jonathan Klein wears, but he does wear pink color pants. Right? So I said, I think we are done with this meeting and I'll see you next time. So English, simple. English is very complex, right? So make sure you are using the word that you should be using, and things that you are saying might be correct here, but they might not be correct elsewhere. Because वो proper English बोल रहे हैं, हम तो pigeon style की बोल रहे हैं, हम तो दुकान में जाते हैं, pants का होगा वाला pants, तो आप मुझे बड़ी झिझक है pants कहने में। Other day I went to the shop और उसको मैंने कहा आपके पास वो हैं cotton की trousers हैं, वो कहते हैं आपका trousers नहीं, सामने खड़ी थी, मैं कहता है pants
ट्राउजर्स पीजेस को ट्राउजर्स बोलते हैं। उसके पास ट्राउजर नहीं कि उसके पास पैंट्स मेरे बच्चे जब पैंट्स पैंट्स करते हैं उनको ट्राउजर्स होते हैं। तो लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा दिल लगाएं, ठीक है? Language is something that you should work at and choose the right words, right? Difficult words नहीं, precise words चाहिए होते हैं। जो proper word है, जो कि आपकी intent convey करता है, which you had in your mind, that is the word that you should be using. Because if you don't, you're leading yourself into it. Right? So there's complexity of language, of course, उससे तो हम मदद नहीं है। और interconnections हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक मुलाज़ा करवाया, but the main thing that holds it up, as we said, was the research question, was the methodology, right? So if you watch up these two things, you really tarnish the concept, so you don't want to ruin that. तो उधर आपको अगर care करनी है, कहाँ पे करनी है, तो आपको वहीं पे, ठीक है? And emergence तो हमने start की थी, लेकिन ये याद रखें कि uncertainty भी जो है contribute करती है complexity की तरफ, ठीक है? And uncertainty के बारे में जितना हमें पता है वो ये कि दो किस्म की uncertainty होती है, goal की और method, ठीक है? अब मेथड्स आपको बहुत आते हैं, कल वो हमें बता रहे थे कि उनको एमॉस भी यूज करना आता है और पीएसएलएम भी यूज करना आ रहा है। ये हमें अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती है, इकोनोमेट्रिक इक्वेशंस और ये वो। लेकिन फिर अगर आप देखें तो बेसिक कैलकुलस का और लीनियर फार्मूलाज हैं, तो बस उसमें कौन सी इतनी पेचीदगी है, लेकिन बस उसको नाम दे दिया गया इकोनोमेट्रिक्स का, तो सडनली लोगों के पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको भी कुछ मेथड्स, आप उसको यूज किस लिए करना चाहते हैं? बातें करना तो हमें भी आती है, आपको भी आती है, मकसद क्या है, उसको इस्तेमाल किसके लिए? तो पास टाइम पे ऐसे हैं कि गोल नहीं, पास टाइम पे ऐसे कि गोल क्लियर है, मेथड्स। तो जब दोनों चीजें क्लियर होंगी तो फिर अनसर्टेनिटी वुड वैनिश. So you need to clarify your goals for yourself as quickly as possible, and then choose the right methods, and that would get rid of the uncertainty, which contributes towards the complexity. Uncertainty remove कर देनी चाहिए. और डेटा के प्रॉब्लम्स जैसे उन्होंने स्टार्ट में कहा, मैंने उनको अजीब सी एग्जांपल्स दी हुई इसलिए कि वो स्टिकी होती है, जरा चलती हैं. बट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज व्हाट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट. अच्छा, डेटा अवेलेबल है लेकिन आपको एक्सेसिबल भी है कि नहीं, दैट्स अनदर प्रॉब्लम यू शुड बी थिंकिंग अबाउट. सेंसिटिविटी ऑफ द टॉपिक इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बच्ची थी यहाँ पे मार्केटिंग कर रही थी. वन डे शी केम इनटू माय ऑफिस एंड शी सेड आई वुड लाइक टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यू. अच्छा ठीक है, अभी बिजी हूँ, 1 बजे के टाइम पे आ जाए, तो इंटरव्यू लेना था. वेल एंड गुड. सो यंग लड़की ना comes into my office, मेरी आदत है मैं फिर दरवाजा खुला रखता हूँ, ब्लाइंड भी खोल देता हूँ, आके बैठ गई. एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल के ऊपर वो डेटा कलेक्ट करना चाह रही थी. एंड शी स्टार्टेड आस्किंग दीज क्वेश्चंस. तो मैं उसको देखा था, मैं कहा बेटा देखें, आप कोई और होते ना तो मे बी दिस वुड हैव मेड सम सेंस, बट ये टॉपिक लिया क्यों है? It might be a good topic for a social science student, which she was a social science student, but culturally क्या कहेंगे सर? Do I feel comfortable talking about things like this with young, adults like that? I don't know. Maybe people should be a little bit more culturally sensitive as well, because akhlaq और वो सारी चीजें अपने culture को जुड़ा रही हैं, उसको तो नहीं है. अच्छा, फॉर्मेट ऑफ द डेटा. अभी हम एक वो कर रहे थे, पेड रिसर्च कर रहे थे पाइड वालों के लिए, जी सिटी ऑफ पेशावर के बारे में ये डेटा और सिटी ऑफ पेशावर के बारे में हमें ये बताएं. डिस्ट्रिक्ट पेशावर के बारे में डेटा है, सिटी पेशावर के बारे में नहीं. नहीं तो आप तो डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं ना, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो जब कलेक्ट ही नहीं हुआ है
वो तो ऐसे करके मुंजमद सा डेटा है ना, तो वेयर डू आई गेट फॉर्मेट उसका कैसा है, क्या उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो डेटा एंट्री करते हुए गलतियां होती है, ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। राशक का नाम, इसको ट्रांसलेट करें, कम है। Does it really mean come here? Rashak ka naam. What does that mean? Sorry, Look at it. चलना, चलना, go ahead. इसको ट्रांसलेट करें, go ahead, go. मीनिंग क्या है? ट्रांसलेशन करना आसान बात नहीं। अच्छा, ट्रांसलेटरेशन लिटरली उसका क्या, गोड़ा के 50, ये पश्तो मजाया फिल्म का टाइटल है, गोड़ा के 50, गोड़ में 50, तो लिटरली गोड़ में 50 मतलब क्या हो, हरश प्रश दुड़ा दबा। इसको ट्रांसलेट कर लें या ट्रांसलेटरेट कर लें, व्हाट डज दैट इवन मीन, हाउ डू यू इवन गो अबाउट डूइंग इट, और फिर क्या आपके पास उस लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है, क्या आप नेटिव हैं, क्या आप उस ये मकाम रखते हैं कि आप एक लफ्ज को ट्रांसलेट कर सकें या उसको ट्रांसलिटरेट कर सकें। आप लोग किस कलर की कुर्सियों पर बैठे हुए हो, पश्तो में बताएं। Shin gate, shin is blue, shin is green in Pashto. और मुझे अभी कहती है चला तो गली में जो है ना वो शीन गेट, तो जब मैं उधर जा घास की तरह शीन के आसमान की है, तो मेरे को हमेशा पता चल रहा होता है कि कौन सा वाला शीन है। So language is inherently complex and causes a lot of problems and issues. And रिजल्ट्स पे सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि बात टाइम पे कुछ मिल जाता है ना, फाइंड समथिंग, और फिर लोग कहते हैं कि ये हमें क्या माने क्या, यू फाइंड समथिंग एंड देन पीपल सिट टुगेदर एंड से व्हाट हैव वी फाउंड, और ये है क्या, कभी ऐसे हुआ, पूरी की पूरी साइंस इससे भरी पड़ी हुई है इस एग्जांपल्स। Scientists find something and then वो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस के नाम से एक बुक है थॉमस कुन की, तो उसमें वो ये बताते हैं पैराडाइम शिफ्ट्स कैसे होते हैं, साइंस आगे जाती किस तरह की है, so उसके अंदर जगह जगह पे एग्जांपल्स देता है वेयर साइंटिस्ट्स फाइंड समथिंग एंड देन दे पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड से ये है क्या, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, और फिर कंसेंसस डेवलप होती है, वो कहते हैं चलो The Structure of Scientific Revolutions by Thomas Kuhn. It was a tough read, लेकिन समझ वाले इसमें दे दिया। तो पैराडाइम का नाम तो आपने सुना? Yes. So that's all I have to share with you. So if you want to ask any question. I hope you learned something. Oh, thank you. Next वाला फिर मैं गंदा करूँ. Any concerns? Anything you want to add? Anything you want to ask? ऐसा सर, हमने ट्रांसलेशन की बात की, तो जब हम क्वेश्चनियर होते हैं उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश से, तो वो उसमें भी इश्यूज होते हैं, परसेप्शन का भी डिफरेंस होता है, या इंग्लिश उर्दू में जाता है तो वो भी मीनिंग चेंज होते हैं, उसके लिए क्या तरीका है कि उसमें डेटा में कलेक्शन में फिर वो चेंजेस ना आए। इसके दो सिंपल से तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप खुद भी ट्रांसलेट कर,
2-3 लोगों पे भी ट्रांसलेट कर। फिर देख लो, तो अगर सबने एक ही ट्रांसलेशन दी हुई है ना, तो बस फिर वो ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप जाएं फिर उर्दू डिपार्टमेंट में और वहाँ पे किसी को पकड़े और उसको कहें कि शाबाश उसको ट्रांसलेट करके दो। नहीं, गूगल सर एक तरीका जो मैंने अपने थीसिस में यूज किया था, जो लिटरेचर में है सर, उसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें और फिर उर्दू की फिर इंग्लिश बनाए। अगर वही इंग्लिश बन रही है तो 2 डिफरेंट बंदों से करवाएंगे, तो फिर आप उसको कैसे? नहीं, प्रॉपर जो बुक्स के अंदर जो डिफेंडेबल तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो जुगाड़ इजाद करनी है उसका मैं इसका रेफरेंस है सर, ये इसमें यूज किया हुआ बंदा है। तो जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि आप मल्टीपल लोगों पे ट्रांसलेट कराएं या आप कोई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर करें। सर कुछ लोग एक्सप्लोर की तस्वीरें यूज कर रहे हैं और प्रॉपरली उनसे कभी कभी उसको ईमेल कर देते हैं, वो जवाब नहीं देते, और वो कभी रिसर्च करते चलो उनकी जवाब आ जाएगी, वो डिनाई नहीं करते। वो थोड़े लोग होते हैं, एक में लिखा भी था कोई जवाब नहीं देते और वो यूज कर देते हैं। इस किस्म की सिचुएशन कॉम्प्लेक्सिटी में फिर उसने एथिक्स के डायलेमास हैं और प्रोफेशनल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कोई पेड इंस्ट्रूमेंट है और वो पैसों के ऊपर आप पैसे देंगे खरीद के उसको यूज करना है, तो उसको मेरा ख्याल से इस्तेमाल करना फिर ना। अगर कोई इस तरह का कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है, मसलन लीडरशिप का इंस्ट्रूमेंट है, वो तो नॉर्थ हाउस की बुक के अंदर पड़ा हुआ है, तो बस आप उठा के उसको यूज करें। तो नॉर्थ हाउस में तो डाला हुआ है ना, इसीलिए कि आप यूज करो, तो दैट्स वेल एंड गुड। उसको वैसे भी हम क्रेडिट देते हैं ना। जी जी, वो तो आपके पास थोड़ा सा, तो वो कहते हैं ना, वो एक पोएटिक लाइसेंस होता है और एक एकेडमिक लाइसेंस होता है। तो एकेडमिक लाइसेंस यही है कि आप उस चीज़ को मनी मेकिंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल करते, आप तो रिसर्च को प्रोपेगेट करने के लिए करते हैं, तो इसमें आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो पेड होते हैं ना, उनको नहीं इस्तेमाल करते। जबरदस्त वैसे सर लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि कभी कभी इस तरह ये अनपेड वो भी होते हैं, लेकिन कुछ जो रिव्यू होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, किसी चीज को पकड़ के नहीं इसकी आपके पास वो नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आपने कैसे इसको नहीं, तो देखिए वो होता है ना, ये बेस्ट एफर्ट्स भी एक चीज़ होती है। आप अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखें कि आपने ईमेल्स की 2 की 3 की, जवाब नहीं आया तो ये जी मैंने ईमेल्स की, मुझे जवाब नहीं आया, तो मैं वो फौत हो गया है, बीमार है, जो भी चक्कर है वगैरह, तो आई ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन आई हैव एक्नॉलेज्ड कि वहाँ से Questions में अक्सर ये भी आ जाता है कि they are being not developed for the same organization or for the same purpose. जी श्योर, that's another। इसमें ये एक बड़ी complexity अक्सर जो है वो इस पे question मार्क होता है कि the questions you have it up, they are developed for different purpose. ऐसे ही like the data in different purpose. ऐसे ही है। वो जो बाज इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर लिया गया, अब वो पॉपुलर हो गए हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। मसलन हॉफस्टेड का जो कल्चरल डायमेंशंस का क्वेश्चनर है, वो तो कोई 160,000 से ज़्यादा लोग भर चुके हैं। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव बीन कैप्चर्ड। उसको यूज़ करने में कोई भी हर्ज नहीं, बिकॉज वो अब हर एक का पर्पस वही करेगा कि कल्चरल डायमेंशंस पे आपका स्कोर नहीं। अब अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट उठा रहे हो और वो आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ उसका कोई संबंध नहीं है ना, कोई ताल्लुक नहीं है उसका, तो फिर आप उसको क्यों यूज कर रहे हो? अब उसमें से आपने कुछ रिमूव कर लिया या कोई एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया, तो अब ये वो इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, ये अब नया इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो अब उसकी वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी के कंसर्न्स फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बिकॉज वी गॉट द ब्रेक आई थिंक नाउ। Yes, sir, they have a break. Sure. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. They're very interesting.